Are we live now? Yes, we are live. Assalamu alaikum and good evening to मेरी all the listeners. Today, Xperteq in collaboration with WIE Lahore, IEEE University Student Branch, Think Connects and Azad Life has organized a workshop on Java for full stack development, including blockchain and data science. We welcome our honorable guest speaker, Mr. Anisur Rahman, to conduct a workshop and to amaze you people with the combination of Java, blockchain, and data science. Over to you, sir. okay, thank you very much. Can you guys see the slides? Yes, स्लाइड शेयर हो रही है? ठीक है जी। yes. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू ऑल। जब हम when we talk about data science and blockchain, the only thing came into our mind in the current scenario is we talk about Python, or we talk about Solidity, or we talk about Go, but we never talk about the one of the very strong language which has one of the biggest code base, and almost millions of the developers around the world are working on Java based applications. For me myself, I'm a CEO of Azad Life. I have around 18 plus experience working in banking, in healthcare, in multiple countries like Malaysia, Saudi Arabia, Turkey, Bahrain. We build healthcare systems based on completely Java full stack, from database till the presentation layer, till the database connectivities, even the business rules. We also build banking systems. We also build health exchange systems, financial systems, fintech systems, educational systems. Most part of the world still are working with Java based. Unfortunately, in our part of the world, like Pakistan especially, the people are moving away from Java, and they are moving toward PHP, WordPress, or TypeScript based languages, specifically React or Angular or Vue.js, maybe because of the most availability of the freelance projects available on Upwork and Freelancer. But there's a very big market right now available, which is expanding rapidly, which are still using Java, and especially in the banking sector. And we have to focus. We need a good developers in Pakistan who are good in writing a code based on Java. Java is one of the oldest language. Actually, not that old. Python is much older than Java. Python is around 35, 40 years old, and Java still came at 95. The Java life cycle is very fast. Before Java version 9, we have very slow life cycle under the anchorship of Sun Microsystems. But as soon Oracle took over Java and Java related products, the life cycle has changed very fast. Now we have 6 months life cycle. We are bringing a new versions very fast, which are non-supported version. Then after 1 year or 2 years, we have a LTS version, which is for longer term support systems. So that can help to build a very extensive, expandable, and sustainable systems, specifically in banking. We have a support for web based. अगर आपको मालूम हो तो जावा इज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज हु ब्रॉट द फुल स्टैक डेवलपमेंट concept into being. Java से पहले नहीं था. We have they brought the servlet APIs back in 97, 98. They brought applets. They brought JSPs. We go on those ones. Huh? So Java life is a lifetime journey. It's the first VM, is a like virtual machine based language which has the concept of write once and run anywhere concept. So you don't need to write multiple applications for multiple platforms. And the good part is still relevant even though we have iOS and Android apps. Still now Java came up with a new AOT based compilation we call ahead of time compilation with Graal VM. There with the same Java code.
We can made application for iOS by using LLVM, and for Android code base. We don't need to change the code base for every other applications. Only thing is how you write your code, how efficient code developer you are. Java community, because Java is based upon the JSRs, Java specification request. That's one of the good thing. No other language has a support of the community like JSRs. So Java JSRs force the Oracle to make Java a modular. Now Java, from Java 9, Java become a modular VM. We don't need to develop an application and bundle with a complete JDK or complete JRE. We can only use those jar files which are required for our projects by using JLink, and it become very fast for our development. Like, we can deploy with a very less footprint. If you think, I'm sure you guys are working with Angular, React, Vue.js based on Node.js server engine. You have found that when we are going to develop a very simple application, the footprint is very huge. When we are going to deploy a very simple application, the footprint is one of the biggest footprint I saw in React and Angular, because we got so many unnecessary libraries which are have multiple dependencies with each other. So when we deploy such a big application, even by using continuous deployment like CI/CD, it takes a lot of memory, a lot of resources. The beauty of the Java is, after coming from Java 9, become a modular, the footprints is merely a kilobytes, not even a megabytes, and you have a full-fledged application. Before Java 9, or actually before Java 9, we have JIT, like just-in-time compiler. Just-in-time compiler is when you run the application, it compiles within the JVM and execute. It has their own benefits, especially when you are doing your dynamic injection or class loading, and you have very dynamic framework like Spring, is like GIT, based on GIT, where you are injecting different applicated classes at runtime. But they also came up with now AOT, like ahead of time compilation, which is actually bytecode, same like C language. You have like exe file, you have deb file, you have shell script, uh, by using GraalVM. GraalVM is also a Java VM developed by Oracle, having both community edition and enterprise edition. So we use GraalVM, and we can use the AOT based compilation, and we can execute with a very fast way execution, just like your C applications running with .exe. The startup time is even in very very microseconds for even a bigger application. Like if you start uh, microservices servers like Micronaut or Quarks, it take milliseconds to start. The startup time is very fast if you for GraalVM, but there is again pros and cons based on your development model, that you want to go for JIT or AOT. Java is the only application, only language who brought the enterprise into being. J2EE, हम सब जानते हैं J2EE जब भी word use किया जाता है, it is enterprise. We have EJBs, we have session beans, we have entity beans before J2EE 1.2 to 1.3. I mean, that was one of the extremely useful containers at that time. हम लोगों ने यूज किया है for healthcare application when we are deploying. और J2E was one of the first full stack development environment, जहाँ पे आप GSP based application बना के deploy कर देते थे. They have the JMS, they have the uh, connectivity with the databases, configuration with the databases. Apart from the complexities at that time, because हमारे पास XML configuration बहुत complex होती थी, but still people came up with different build tools to help us to come up with those to overcome those complexities. J2E जब आया 1.2, तो we also got IBM came on board. IBM WebSphere आ गया आपके पास. J9 का VM आ गया. इसके साथ we got an open source versions. Open source when came by JBoss J2E server was one of the very fresh air in the space of Java technologies.
कि हम JBoss सर्वर को यूज़ करके एंड देन Tomcat सर्वर को यूज़ करके वी कैन deploy our servlets, our GSPs application, and we can run and deploy, and we can have a very fast and very secure applications running in a secure container. जो कि उसे at that time we don't have any other alternatives for J2EE. Even Microsoft C and C Sharp, all those came after J2EE, and they copied the same concept into their own environment by bringing the VM based container and the platform for C Sharp. Tomcat has the specific JSP specifications implementation or servlet specification implementation कि आपको सर्वर साइड वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की इजाज़त दी. Java ने आपको they also brought up with the native application by using Java Swing, AWT, and Swing is one of my favorite platform till now. That's still most of the IDEs. If you are a member of the IntelliJ is developed with the Swing framework, and Swing framework is still integrated in Java core APIs, and NetBeans is also with made by Swing, and they also help to produce a rich client platform. I come up later. How can we use those IDEs for developing a rich client application in a faster mode and in a much nicer mode? The best thing when Java came is the when we जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको जावा सी के हिसाब से सिखाते हैं. दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि people in college life, the teachers and professors, they are not into a real life. The real life programming is something totally different than the teaching a language in a classroom. That's why I have a very uh, negative feelings for the people who are teaching programming in the academia. They are totally cut off from the real scenario. Even they are teaching Angular or React or Vue, they never they never have built a single application. Like me, I already develop application with Angular, with React, with Vue, with Java Swing. We can, I mean, I saw the people who are teaching in academia in Pakistan. They are totally cut off the reality of the real application. होता क्या है कि जब आप लोग ये इस तरह की सिनेरियो से एकेडेमिया से बाहर आते हैं, यू हैव नो आइडिया, बिकॉज आप जावा पढ़ते हैं तो जावा सी के साथ आपको कंपाइलेशन सिखा रहे होते हैं. They don't teach you how beautiful build tools are available for you. Apache Ant came in 98, 99. We use Apache Ant at that time. Ant mean and other neat tool. जो कि आपकी डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कंपाइलेशन एडजस्ट आपकी टर्मिनल बेस पे कर देता था. और इसकी जो सपोर्ट है वो मुख्तलिफ IDEs ने दी. If you are using Eclipse IDE, by using NetBeans, if you are using IntelliJ, they always came up with the support for Apache Ant at that time. Then Maven came. Apache Ant के टाइम पे में क्या होता था कि we have to download the dependent jar files manually, and then we have to add those dependencies linked in our configuration file, so that when we are going to build that our project jar file or fat jar file, they can take from those lib folder and embed into and make a big jar file. So that sometimes become very hard to use the versioning of the different APIs. Then Apache Maven came. Maven is I'm still Maven lover, not a Gradle lover, but still Apache Maven came, and Maven have ease our life, the development, deployment, and even the integration with different servers. It becomes so easy that कि आपको application development एक fun बन जाता है Java base का. चाहे आप you are developing an application for enterprise, you are developing application for Swing, you are developing an application for rich client application or database application or data science application, machine learning application. When you came on the build tool, you just use Maven and you use the Maven repositories. It will do everything for you. And if you make it as a current version, it will take always the current version. It makes the versioning very fast. So if you are going for building a Java based application, you must remember
These are the three things which should be in your heart, in your soul, in your blood: Apache and Maven and Gradle. Gradle become very famous because it came for Android, and IntelliJ use Gradle as their default build engine. And most of the people who are developing Android application, I'm sure they know the Gradle very well. But still, you can use Maven also for the Android-based development. And Android is also basically a Java VM extracted from Harmony. Harmony was the open source VM. Actually, Harmony and Sun has some issues for in the long past. Android Google has used Harmony VM for their Android based application, and most of the API is very similar to Java. After that, IntelliJ came with a new language called Kotlin, and Google has ported Kotlin. Actually, Kotlin is also a Maven based, is a VM based scripting language. By the end, it's a VM based, JVM based language. जैसे कि आपके पास Scala है, आपके पास Groovy है, they all are JVM based language. कहीं ना कहीं अब जावा ने खुद स्काला को और ग्रूवी को कॉपी किया, उससे अच्छी चीजें अपने अंदर बिल्ड की, एंड दे ब्रॉट अप विद द all the functional level programming apart from the object oriented. तो client side development, if आई एम नॉट श्योर, आप पाकिस्तान में लोगों को डेवलपमेंट नहीं करते, तो अभी भी आप अगर आप नॉर्वे में जाएं, न्यूजीलैंड में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, most of the applications for the banking sectors are built with JSP based MVC2 framework, Apache Struts. Some are still using Apache Strut 1.x, and some are moved toward Apache Struts 2.x. न्यूजीलैंड की तमाम बैंक्स अपाचे स्टड्स के ऊपर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तमाम बैंक्स, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी व्हिच आई वर्कड with them, they are based on struts. And still I came to know with one of my projects we are doing for Norwegian clients, those banks are based on struts, and struts is still based on GSP JSR, they are GSP based or servlet specification based. जावा ने जब एप्लेट को लॉन्च किया था, एप्लेट वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, क्योंकि आप वेब से बेस, वेब को यूज करते हुए आप यू कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ योर क्लाइंट मशीन. दैट वाज वन ऑफ द, जब HTML5 के स्पेक नहीं आए थे, नाउ दे ऑलरेडी अबैंडन द एप्लेट, but at that time till 2008-9, applet was one of the only option we can use to access the USB ports, serial ports, parallel ports for your client machine by using web based application. That was one of the biggest benefits for using Java applets. But now HTML5 came already provided the too much support for hardware access. Even the Chrome browser for Android mobiles also provide the support for your Bluetooth, so that you develop your BLE applications very easily for Chromium based application. इसके अलावा Apache Pivot है, and there are many more based on JSF, a GSP based specification. Apache Pivot is also a component based, but you have a lot of alternatives you can use for GSP based application, and they are still valid. अब क्या हो गया कि हम लोग, we are thinking about Flink, Flask for Python. They are already inheriting the same concept which Java already provided in the JSP spec for the full stack development when we deploy the same thing into a G2EE container or Tomcat container, which has everything. And the the biggest good part at that time, they are multi-threaded, not single-threaded. But there is a pros and cons for multi-threaded and single-threaded. क्योंकि इस पे Node.js आके आया, Node.js ने कहा we are the single-threaded platform, and we are working on the Cubase, and with the less resources we can provide more benefits. And Java came with the same response. हम आगे आगे देखेंगे. Component based web development आ गई, we call it Java server faces. उसके अंदर implementation आ गई, my faces, prime faces, JBoss की implementation आ गई, and people are developing a very fancy application based on JSF specs, and they are still used, and the deployment, the development is so easy that you can extend to any level.
अब टाइम आ गया रिच एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज ने कहा कि वी आर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, that we are here for developing a single page applications and we are rich application development. एक्चुअली जावा इसमें भी पाइनियर था। गूगल जो गूगल ने सबसे पहले गूगल वेब टूल किट लेके आया था बिफोर दे आर मूविंग टूवर्ड एंगुलर, and then Facebook came for their React platform. Unfortunately, Google Web Toolkit not able to grasp the root. Even अगरचे that was one of the beautiful toolkit. परफॉर्मेंस वाइज जब कंपाइल करते थे तो परफॉर्मेंस स्लो होती थी, कंपाइलेशन टाइम बहुत लेती थी, बट एग्जीक्यूशन टाइम इट वाज मार्वलस एक्साइटिंग कि अब आपकी रिच एप्लीकेशन एंड देयर आर अ लॉट ऑफ open source and commercial products came to support GWT. Even the Vadin framework came after the GWT came into existence, and Vadin are using GWT based widgets for their own application. I am one of the early adopters of Vadin, and I use Vadin from 1.x till now. Still, my or most of my applications are based on Vadin framework using Spring Boot and Tomcat plus Macronaut. JavaFX is a successor for Java Swing. They want to make Java rich client more nicer, more attractive, much have support for CSS, have support for 3D, have support for more dynamic animations, and it was one of the beautiful language spec after coming from scripting to Java API, and still I'm use Java FX for nice desktop applications, and now Java FX is moving toward web-based also application by the help of JPro One. JPro One is translating the Java FX canvas to HTML5 canvas at the runtime. That is one of the exciting part. Java Swing, of course, still mean that is the mother of every desktop application. अगर आपने सी बेस आपने अगर क्यू लैंग्वेज को यूज किया हो, दैट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क फॉर नेटिव एप्लीकेशंस. द अदर ऑल्टरनेटिव वाज जावा स्विंग, कि हम जावा स्विंग पे एप्लीकेशन बना के वेब पे लाने के लिए वी गो फॉर जावा वेब स्टार, और वी कैन मेक ए big jar file and we deploy at some server which is downloadable through JNLP or Java Web Start. So we have still a lot of alternatives which are provided by the Java for the full stack development. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट को वी जस्ट कन्फाइन ओनली विद Python, JavaScript, PHP, or TypeScript. We have a database, MySQL, Postgre, and we are using some framework like Symfony or Laravel, uh, and then there or Node.js, their connectivity using REST APIs. These are the same thing we are already using in Java-based environment by using EJBs, by using session beans. We are using GMS for message oriented applications. We are using queue based application, and we have one of the excellent commercial queue engines or broadcasting engines, and we have open source like ActiveMQ, web, uh, etc. Zero MQ also is one of the beautiful framework for. And then we came for Node.js alternative in the form of Vertex, which is a single-threaded queue engine, just to uh, counter the Node.js based applications. Now we talk about microservices, because microservices is one of the buzzword these days, but still people are using microservices as a small service for monolith application. But Java world has Spring Boot. अब क्या है कि Spring Boot is the can say कि the synonym for microservices. जब हम microservices की बात करते हैं तो फौरन आपके ज़हन में वर्ड आता है Spring Boot. But we have a very specific microservices based container called Macronaut, Quarkus, and then we have a JHipster.
We can use these framework for uh, single threaded and microservices specific applications. इसके अलावा जावा के अंदर एक और स्पेसिफिकेशन है, मुझे उसमें मैं ज्ञानी हूँ, वो एक सेपरेट पार्ट बन जाता है। हम उसे ओ एस जी आई कहते हैं। ओ एस जी आई इज मॉड्यूलर कंटेनर्स, जो कि अभी इसका ऑल्टरनेटिव किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, कि आपकी वर्जनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट बिकम वेरी फास्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मैनी applications with many versions running in the same container. So OSGI का अभी तक कोई alternative exist नहीं करता था in any other environment में। तो that is one of the excellent part। और जावा मॉड्यूलर बना भी OSGI स्पेसिफिकेशन के बेस पे था, कि अब आपको जब आप जावा रन टाइम यूज करते हैं 17 या 11, तो आपको जब आप जेलिंग के साथ करते हैं तो आपका जो फुटप्रिंट होता है इज जस्ट इनटू केबीज। जबकि आप जब टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपका जो फुटप्रिंट होता है समटाइम इट्स गो टू इनटू जीबी, such a big footprint for some bigger application. Most of the application, even if you want to have like healthcare, हॉस्पिटल्स वांट टू हैव देयर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट बेस पे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फुटप्रिंट है इट्स लाइक गीगाबाइट्स, इट्स सो ह्यूज टू डिप्लॉय, कि आपको सीडी के ऊपर आवाज अपने प्रोजेक्ट्स को देना पड़ता है कि आप अपनी मशीन्स पे इंस्टॉल करें। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। और एच टी एम एल, बिकॉज एच टी एम इज नॉट ए लैंग्वेज, इज ए मार्कअप लैंग्वेज। ओआरएम सोल्यूशन ये भी जावा के अंदर सबसे पहले आए। हाइबरनेट सबको मालूम है, इवन आपका सिम्फनी जो है, सिम्फनी इज ए रेप्लिका ऑफ हाइबरनेट। और लारावल भी ने भी हाइबरनेट को ओआरएम कॉन्सेप्ट कॉपी किया। एक्लिप्स लिंक आ गया है फ्रॉम एक्लिप्स कम्युनिटी। एंड वी हैव स्प्रिंग डेटा, एंड स्प्रिंग डेटा इज यूजिंग डिफरेंट लेयर्स, कि आपको एक एब्स्ट्रक्शन लेयर दे देता है कि डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइबरनेट एक्लिप्सिंग। इसके अलावा और बहुत से हैं जो कि मैं उनको यूज अभी नहीं कर रहा, कि दे आर बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स, बट वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट। अब आ जाए फुल स्टैक डेवलपमेंट। सबसे पहले जो एक फुल स्टैक इन्वायरमेंट आया था वो हमसे कहते हैं क्यूबा प्लेटफॉर्म। क्यूबा प्लेटफॉर्म वाज बेस्ड ऑन वादीन फ्रेमवर्क। अब क्यूबा प्लेटफॉर्म को जेमिक्स भी कहते हैं। क्यूबा प्लेटफॉर्म इज ए जीरो कोडिंग प्लेटफॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आया था कि हम कहते हैं कि वी जस्ट नीड ए डोमेन ड्रिवन एप्लीकेशन। डोमेन ड्रिवन एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक जो डोमेन, जैसे आपके डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, डेटाबेस टेबल्स आर एक्चुअली replicating your use cases on your client side. जब आप वो every table sometime has a one form, or sometime two tables are joined to have a one form, multiple like table form में आ गया, master detail form आ गया। तो why not just we use hibernate pojos? Pojo mean Java object which has getter setters, and then at runtime we translate those pojos into a full stack runtime application. So Cuba platform, they started with that model for domain driven design. Now they are called JMix. If you don't want to go for the zero coding platform, Vadin framework is still there. We can develop a full stack development by using Vadin. It's a free to use, except from some commercial APIs or commercial bundles. And plus, good thing is Vadin is a modular framework, so you can also deploy in OSGI environments or modular environment. You can use JavaFX with JPro 1. You can use Spring Boot, JHipster, or Hibernate. You can also use the rule engine. And rule engines are one of the biggest help in Java space, कि आपको business logic और बिजनेस व्यू आप सेपरेट कर देते हैं। आपको बिजनेस लॉजिक को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता इफ एल्स कर करके अपने व्यू के अंदर आप इसको आप सेपरेट रूल इंजन में डाल देते हैं। यहाँ तक कि यू कैन मूव योर बिजनेस प्रोसेस फ्लोज बीपीएम्स और रूल्स को भी सेपरेट कर देते हैं, कि आप अपना बिजनेस फ्लो को भी अपने कोड में नहीं डालते। सो that kind of full stack development you can use with the Java based environment.
नाउ वी आर केम विद द जावा वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट. मैंने काफ़ी हद तक डिफाइन कर ही दिया है कि टाइपस्क्रिप्ट वी आर यूजिंग रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस. और फनी थिंग इज, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट, जावा जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, एंड टाइप स्क्रिप्ट इज फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट the Java has provided, like interfaces, like export. I mean, their same level of complexity is there in TypeScript based applications, and plus they are also running on the server side. So if you want to use something on the client, आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही है, आपको jQuery यूज करना ही करना है. सो देर इज, अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आता कि वाई शुड आई लर्न ए न्यू लैंग्वेज if I just need to learn a one language which is Java, and I can develop each and every part of the application, whether it's a database application, data centric, rule based centric, web based, native application, desktop application, data science application, blockchain based application. We just need to learn one code base. I don't need to learn with too many code bases, and then we need to face with the वो जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं डिप्लॉयमेंट के, इंटीग्रेशन के, आपके जो फंक्शनल टेस्टिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो बच जाते हैं. आपका जो फुटप्रिंट है, टाइपस्क्रिप्ट इज ए वेरी ह्यूज ह्यूज फुटप्रिंट, जो सबसे बड़ा विच आई फील वेरी बैड, कि आपको जब छोटी छोटी एप्लीकेशन भी बनाए तो जो फुटप्रिंट आता है वो बहुत बहुत इट इज मच लार्जर एज कम्पेयर टू के बीज ऑफ जावा, जावा फुटप्रिंट. अगर आपने you want to go for a desktop based TypeScript application, you have to go for Electron, and Electron footprint is a very big footprint. Node.js is a single threaded server, which is a very positive sign, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स जो थे आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते थे एट दैट टाइम. अब तो आपके पास काफ़ी कोर्स आ गए हैं, और सर्वरलेस में जो इन्वायरमेंट है वहाँ नोड जेएस ने बहुत फ़ायदा उठाया कि आप बहुत ज़्यादा AWS के या अजूरे के रिसोर्स नहीं यूज़ करते थे. लेकिन अब उसका ऑल्टरनेटिव जावा ने भी दे दिया, वर्टेक्स का. आई थिंक वर्टेक्स इज एज ओल्ड एज नोड जेएस. और जावा टाइपस्क्रिप्ट, तो जावा इज, द फनी थिंग इज, द गुड थिंग इज, गिटहब के ऊपर सबसे ज्यादा रिपोजिटरीज जो है वो जावा डेवलपर्स की हैं. अपाचे के जो सबसे ज्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो जावा के हैं. जावा जब से मॉड्यूलर हुआ, इसका फुटप्रिंट के बीज में चला गया, यहाँ तक कि आपको पूरा JRE इंस्टॉल नहीं करना, आपने जेलिंग यूज करना है जावा 9 के बाद, वो आपको एक प्रॉपर JVM इंस्टॉल कर देता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर. आपको क्लाइंट साइड पे अब JRE इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जो कि पहले हमें करना पड़ता था ओल्ड टाइम्स में. Vertex is a Java alternative for Node.js, and Vertex is supported by Eclipse community, जो कि Eclipse IDE बनाती है. is a huge community, and almost is a similar to Node.js. जावा एंड डाटा साइंस, आप बहुत से लोग डाटा साइंस पाइथन पे आते हैं कि हमने डाटा साइंस एप्लीकेशन बनानी है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट डाटा साइंस लैंग्वेज इज एक्चुअली स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज, विच इज R&S. आर ने बहुत पहले ही आपको JVM सपोर्ट दे दी थी कि आप उनके JDBC ड्राइवर के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे फॉर एग्जीक्यूटिंग योर स्टैटिस्टिकल मॉडल. हम लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट एक्चुअली इन रियलिटी हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ही को एग्जीक्यूट करते हैं. तो जावा के साथ आप बैठ के जावा की एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट आर के साथ थ्रू JDBC कर लें. और फिर H2O.ai आ गया. H2O.ai ने बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम जो स्टैटिस्टिकल के जो आर में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और आर में एक प्रॉब्लम था कि वो सिंगल थ्रेडेड और सिंगल कोर एप्लीकेशन थी. H2O.ai ने आकर आपको वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, एंड दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टैटिस्टिकल मॉडल which you can use for executing in a faster pace for your most of the data science execution problems. आपको जो भी अपने एल्गोरिदम यूज करना है, हम लोग ज़्यादातर वही जंप, हम लोग टेंसर फ्लो की बात करते हैं कि वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जबकि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग नीड अ लॉट ऑफ आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज. आपको बहुत ज़्यादा GPU रिसोर्सेज चाहिए, जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर डाटा नहीं है ट्रेन करने के लिए तो आपका इज अ ड्रॉबैक. सो आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल पे जाना पड़ता है टू एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन फॉर योर डिफरेंट
जो आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, जो आपने प्रिडिक्शंस फाइंड करनी है. तो आर is as if like is a very totally marriage, totally married couple है with Java के साथ. With H2O AI is a classy. Even TensorFlow, अगर आपको TensorFlow पर ही जाना है for the machine learning, they have the Java SDK. So आपको Python लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर आप you go for Python, the TensorFlow, the जो एक बेहतरीन चीज है, इट्स नॉट टेंसरफ्लो, इज क्रॉस मॉडल्स. तो क्रॉस मॉडल्स की सपोर्ट आपको डीप लर्निंग फॉर जे ने दे दी है. यू गो फॉर डीप लर्निंग. मैं पर्सनली यूज करता हूँ ओपन एनएलपी या स्टैनफोर्ड एनएलपी, जहाँ पे हम लोग चैट बॉट्स बनाते हैं. हम एंड हम आप लोग सेंटिमेंट एनालिसिस, इंटेंट एनालिसिस, और हम लोग खुद अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं बाय यूजिंग ओपन एनएलपी, स्टैनफोर्ड एनएलपी फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. इवन अपाचे एमएक्स नेट आपको मशीन लर्निंग फॉर दे देता है फॉर गेटिंग द इंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, एंड इट्स आल्सो जावा बेस्ड. बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ओरेकल अपने लिए जो यूज करता है मशीन लर्निंग लैंग्वेज वो जावा बेस्ड है. उन्होंने तकरीबन 2 से 3 साल पहले उसको ओपन सोर्स कर दिया था. ट्रिब्यो ट्रिब्यो की एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट. यू गो फॉर मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. डीप लर्निंग फॉर जे, अगर आपको डीप लर्निंग पर जाना ही जाना है तो गो फॉर डीप लर्निंग फॉर जे, एंड दे हैव द वेरी गुड इंटीग्रेशन विद द क्लास मॉडल. वो आप क्लास बेस्ड मॉडल्स को डीप लर्निंग फॉर जे में यूज करके एग्जीक्यूट कर सकता है. Now we came on the blockchain. Hyperledger Fabric बनाई जावा पे हुआ है, एंड दे फॉर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यू कैन यूज गो, जावास्क्रिप्ट एंड जावा. ये सबसे बड़ी एक जावा की पावर ऑफ द एग्जांपल है. कोर्डोआ, कोर्डा की जो है इस ओपन सोर्स ब्लॉकचेन, परमिशन ब्लॉकचेन है, और ये भी जावा बेस्ड है. इन्होंने आपको कोटलिन की भी सपोर्ट दी है फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जावा बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है. इथेरियम इज फॉर नाउ फॉर वेब 3.0. अब हम सब लोग बात करते हैं NFTs एंड Web 3.0, and we use all Ethereum as one of the mother of NFT. Of, but they also have Web 3J to use them for your, apart from हम Solidity में बना लेते हैं, but Web 3J में बना के हम उसको Java Pojos में translate करके, and we can use for our Java based applications. So I came on the conclusion. Again, just one code based language for any full stack development from A to Z. कि आपको मल्टीपल चीज़ों को नहीं सीखना है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कि आपको यू नीड टू लर्न मैनी थिंग्स. ओके, आई विल, जब अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन, मैं कंक्लूड कर लूँ फिर मैं क्वेश्चंस आपके देखता हूँ. एंड थैंक यू. Now I will go for your questions and then I will try to give the answers. Questions किधर है? We have a few questions. Yes. What is fallback hack? आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर लीजिए, स्पेसिफिक टू आवर प्रेजेंटेशन. मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नहीं देने आया, तो इट्स बेटर यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर कंप्यूटर साइंस टीचर. देखिए, पाइथन का प्रॉब्लम क्या आता है कि पाइथन इज़ ए वेरी गुड बट पाइथन इज़ स्लो. पाइथन का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो बहुत स्लो है. उसका जो VM है वो बहुत स्लो है. इट्स वेरी स्लो एज कम्पेयर टू जावा VM. So if you but now because we have a lot of resources available in our uh, CPU or GPU resources is negligible, but still Python is very slow as compared to Java. Plus Python is intent based application just like YML. So अगर आपका थोड़ा बहुत भी intent ऊपर नीचे होता है तो वो different route पे चला जाता है. And the debugging support, the Java support with the IDE is one of the beauty you can find with the Eclipse IDE. You can go for your NetBeans, you can go for IntelliJ. That support is very, very huge.
The deployment is very fast for Java based stack. And for Python, it's good for university level. For me, I love Python if I want to do some experimentation. So most that's why Python is used most for experimental project. When you go for real time applications, they are using MATLAB, or they are go for the projects based on MATLABs or deep learning for J, or they are going for H2O. For Python, TensorFlow, still most of the application आप देखेंगे, they are used by the universities for experiments for building the new concepts. Yes, Neeraj? Sorry, Nirjal? Any other? That's a beautiful thing. Both are VM based. Python भी VM based है और Java भी VM based है. And only thing is the Python आपका जो core है VM वो भी C पे है, Java का भी C पे है. So that you can say a similarity. But और हाँ एक और similarity है. Both are very old. Python is 10 year older than Java. हम लोग Python पहले यूज किया करते थे for our ETL. For ETL transformation. Python ने जब TensorFlow आ गया तो they become very famous. But back in 2004, 2005, or till 2004, 2005, we use Python for ETLs. For your big data or for your data transformation. For not for the real full stack development or any other application. But after Python, TensorFlow came and Python become very famous, become buzzword. Many people move toward Python for ease of development. Development ease है Python में because आपको बहुत ज़्यादा वो टाइप सेफ नहीं है. I mean, easy to develop, but अब Java भी easy to develop हो चुका है. After Java 17, वो जो good things हैं for Python, Scala, Groovy, they already adopted. Plus, it's modular, is a fast to develop and with small footprint to deploy. ओपन सोर्स दो चीजें आती हैं. एक होता है फ्री टू यूज, एक होता है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स आपका आ जाता है जब आपको कोड बेस भी दिया हुआ है. तो जावा के अंदर बहुत सी चीजें आपको हैं जो ओपन सोर्स हैं, जब आपको कोड बेस मिल जाता है. एंड मोस्ट ऑफ थिंग दे आर फ्री टू यूज विद डिफरेंट लाइसेंसिंग. लाइक आपको देखना पड़ता है ओपन सोर्स लाइसेंस को कौन कौन से हैं, तो दैट यू हैव टू गो एंड सी. बाकी दिस Oh, that's a good thing. If you are, for me, if you are Java based, you just need Java. आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है. But if you are on the other stack, you need to learn TypeScript, you need to learn middle tier, Node.js, JavaScript, Electron, Laravel, a lot of stuff you need to learn. But if Java आपको Java language आती है, and that's all. Even the Vadin आपका code Java base है. आपको जैसे आप सिंपल जावा एप्लीकेशन लिखते हैं वो रन टाइम पर ट्रांसलेट करके HTML बन जाती है एंड इट्स रिच क्लाइंट. और आपका जो जेमिक्स है क्यूबा प्लेटफॉर्म है वो भी आपका वो जीरो कोडिंग है, डोमेन ड्रिवन है. तो आप वो जीरो कोडिंग पे आपको कोड जनरेट कर दो, वो कोड जनरेट कर देता है आपको. यू डोंट नीड टू write most of the code by yourself. JMix is a free to use, but they also have a commercial version. Uh, it's a bit beginner level Python or Java. That's a bit. If मैं हूँ तो I will go for Java. क्योंकि Python में प्रॉब्लम क्या है कि it destroy the coding habits of the people. जो easiness coding की दे देता है Python, उसमें आप बाज़ दफ़ा वैसे अब तो Java ने भी almost कॉपी कर ही लिया Python की easiness को. So not a big difference. Coding is how you code. Apart from any language, Python है, Java है, PHP है, लॉजिक ऑफ द कोड इज सेम. हाउ यू इम्प्लीमेंट इट्स अप टू यू. हम लोग जब PHP पे भी यूज करते हैं, मीन आवर कॉन्सेप्ट इज सेम. हाउ वी डू इट, हाउ लेस वी वांट टू नो इट, दैट्स व्हेन द जावा केम. मीन आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल मिल जाते हैं, आपको डेवलपमेंट फास्ट है, आपका रिच क्लाइंट मिल जाता है, आपको रिच क्लाइंट प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, आपको ORMs मिल जाते हैं. और आपको एक चीज़ सीखनी है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें नहीं सीखनी. तो ये एक बेनिफिट है. बट इफ यू वांट टू गो फॉर फ्रीलांसिंग लाइक फाइवर पे आओ, तो वहाँ ज़्यादातर जो छोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं,
they are on TypeScript based. But if you want to go for bigger projects और आप बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं in different part of the world like स्कैंडिनेवियंस हैं, आपके फार ईस्ट एशिया है, न्यूजीलैंड है, ओजी है, यूरोप है, ऑल द बैंकिंग सेक्टर इज जावा बेस्ड. अब जो कोबोल बेस्ड थे वो कोबोल बेस्ड के बाद देयर ओन सेकंड चॉइस इज जावा बेस्ड, तो वो जावा पे ट्रांसलेट कर रहे हैं. और nobody want to go for any other. But yes, e-commerce पे जब e-commerce आ गया तो e-commerce people move toward TypeScript based. I think we are getting out of time. One question I will take. Mm, I think that's a good question you can ask for your classroom, your teacher. यहाँ पे मैं आपको बिगर पिक्चर पे देने जा रहा हूँ. तो if you want to know some more thing about Java as a full stack or Java into data science, so I can give you a good answer. Or otherwise, because I have to move somewhere, मुझे जाना है, so we can conclude our presentation. Okay, thank you so much, sir, for your precious time and this wonderful session. I hope our audience enjoyed it. Dear participants, thanks a lot for attending the session. Your certificates will be shared within 2 days, and our next workshop will announce in our official groups. Stay tuned. Goodbye. Okay, thank you very much. Goodbye. Bye bye.